Hello dear learners, this is GB sir welcoming you to my YouTube channel Get English Command. In this video today, we will learn about the second sentence component, that is verb. As we have already studied about the first sentence component, that is subject, in our previous video. So now without being late, let us start learning about verb in detail. So, first of all, we will see the meaning of verb. A verb is a word that shows an action or state of being of the subject. So, in the meaning of the verb, we have to consider two things very carefully. That one is that subject, that's verb is the word that shows an action of the subject. So here this is action. Okay, so this is the first important thing about the meaning of the verb, that is it is the word that shows an action of the subject. Next thing is that it also shows the state of being of the subject. Now many students may have the doubt about state of being. We know clearly, most of us, even basic learner also, they know that what does it mean by action. उन्हें action समझ में आते हैं. Action are the words such as jump, drive, read, sing, take, give. So these are the words that expresses an action of the subject. But what does it mean by state of being? So state of being means ये एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सब्जेक्ट की स्टेट दिखाते हैं. स्टेट या फिर कंडीशन बोलो, इन व्हाट कंडीशन द सब्जेक्ट इज और इन व्हाट स्टेट द सब्जेक्ट इज. So if there are such verb in a sentence, they are called as stative verb. So see here, I will explain it with some examples. So he broke the glass. Now in this sentence, he broke the glass. In this sentence, the word broke is verb. But what type of verb is this one? It is action verb. It is showing an action, right? So broke is here action verb. Now broke is the word that is showing an action of the subject, that is of breaking the glass. Next, in the second sentence, Rohan has two cars. Now in what condition? Here verb is has. Has is the verb, and has here is not showing any action. So here has is stative verb, that is showing the state of the subject. कौन सी स्थिति में subject है, तो कौन सी स्थिति में he has two cars, that is his state of being. Then in the third sentence, we have she is so honest. Now here in the third sentence, the verb is. So is here is not showing any action, but it is showing the quality of the subject C, and that is why it is stative verb, that is showing the state of C, that is subject. तो किस स्थिति में subject है, तो और किस कंडीशन में सब्जेक्ट है, तो हाउ द सब्जेक्ट इज, तो ऑनेस्ट है. सो दैट इज व्हाई हियर is stative verb. Then in the third, that's the last fourth number of sentence, the food tastes delicious. अब food जो है वो how it is tasty, so it is delicious, right? So here the verb taste is showing the taste of the food, that is delicious. So that is why we say that in the sentences number fourth, then in the third, and then in second, these are the verb like has here, then so here, and then taste here. They are not showing action of the subject. On the other hand, they are showing the state of being of the subject, and so they are stative verb.
as they are showing the state or condition of the subject. Now let's move ahead. Now let us see the types of verb. As we have seen that there are the verbs that can either show the action of the subject or the state of being of the subject. Now let us see the types of verb. The verbs are classified in some different types. The types are based on the meaning, forms and function of the verb in the sentence. अब जो वर्ब होते हैं उनके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो जो टाइप्स है वो कौन से आधार पे हमने उसका क्लासिफिकेशन किया है, तो क्लासिफिकेशन करने का जो आधार है, जो बेस है, वो है वर्ब की फंक्शन, राइट। तो एक है मीनिंग, जो आधार है क्लासिफिकेशन करने का, जो कैटेगरीज ऑफ वर्ब करने का जो आधार है वो है एक तो मीनिंग ऑफ द वर्ब, दूसरा फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड वन अनदर बेस इज दैट ऑफ फंक्शन ऑफ द वर्ब इन द सेंटेंस। सो ये तीन चीजों के आधार पे हम जो वर्ब होते हैं सेंटेंस में उनको एक विशिष्ट कैटेगरी में उसको क्लासिफाई करते हैं। तो लेट अस सी दैट नाउ। Since a verb can be used in more than one way, so it can fall into more than one types। अब एक बात और दिक्कत है कि क्या हम एक वर्ब को बोल सकते हैं कि ये इसी टाइप का है, इसके अलावा दूसरी टाइप ये पर्टिकुलर वर्ब की हो ही नहीं सकती। नो, वी कैन नॉट से सो, बिकॉज अ वर्ब कैन fall into more than one category, as it is the categories are based on function, then form and meaning. So because of that we can't say that, or we can't classify a particular verb into only one category। तो एक कैटेगरी में हम इसको वर्ब को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। तो एक जो वर्ब है बहुत सारे कैटेगरीज में हम उसको इन्वॉल्व करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शन, फॉर्म एंड मीनिंग। तो वर्ब कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टू टाइप। अब एक बात और है, एक वर्ब जो है एक से लेके दो तीन कैटेगरी में भी आ सकता है। सो दैट इज व्हाई there is no perfect category for a particular verb, but definitely there are categories of verb on the basis of form, function and meaning of the verb। Now in a broad sense the verbs are classified into two types। तो अगर हम ओवरऑल कैटेगरीज देखेंगे वर्ब की, तो बेसिकली देयर आर two categories of verb। so let us see which are they in detail। So the as I said you that the verbs are broadly categorized into two categories, into two types। so which are the two types? One is that main verb, this is the one category, and the another one is auxiliary verb। so these are the two main categories of the verb। and now let us see, first we will see that main verb। so main verb, that is the first category। so main verb, it is also called as lexical verb or principal verb। now what is the definition of that main verb? A main verb is the word in a sentence that carries the primary meaning and expresses the core action, state or condition of the subject by itself or with the help of other helping verb in the sentence। तो मेन वर्ब हम किसको बोल सकते हैं? तो मेन वर्ब वो वर्ब होता है सेंटेंस में जो सेंटेंस की इन अ सेंटेंस दैट कैरीज द प्राइमरी मीनिंग। तो वो जो एक प्रमुख ऐसा जो मीनिंग होता है सेंटेंस का, वो कैरी करता है, खुद में ही वो कैरी करता है।
एंड एक्सप्रेसेस द कोर एक्शन, एंड ये एक्शंस दिखाता है या फिर स्टेट ऑफ बीइंग दिखाता है ऑफ द सब्जेक्ट बाय इटसेल्फ और विद द हेल्प ऑफ अदर हेल्पिंग वर्ब्स इन अ सेंटेंस। तो समझ लीजिएगा कि जो मेन वर्ब जिसको हम बोलेंगे वो एक ऐसा वर्ब होगा सेंटेंस में जो सेंटेंस के जो कोर मीनिंग है वो विद इन इटसेल्फ इट विल कैरी। देन it shows the action or state of being of the subject by itself or with the help of other helping verb in the sentence। तो उसको जो एक मेन वर्ब होगा उसको एक्शन एक्सप्रेस करने के लिए या फिर स्टेट ऑफ बीइंग एक्सप्रेस करने के लिए कभी कभार अकॉर्डिंग टू द टेंसेस इट विल नीड टू टेक द हेल्प ऑफ सम हेल्पिंग वर्ब्स। सो इस तरीके का अगर वर्ब है तो हम उसको बोलेंगे मेन वर्ब। तो मेन वर्ब के बारे में हमने क्या देखा, ये एक ऐसा वर्ड होता है, ऐसे वर्ब होता है जो विद इन इटसेल्फ इट कैरीज इट्स मीनिंग, मेन मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। देन ये एक्शन एक्सप्रेस करता है या फिर सब्जेक्ट की स्टेट ऑफ बीइंग एक्सप्रेस करता है बाय इटसेल्फ और विद द हेल्प ऑफ अदर हेल्पिंग वर्ब। लेट अस सी सम एग्जांपल्स अबाउट द मेन वर्ब। Now he teaches well. In this sentence, he teaches well. अब ये जो है teaches, teach is the verb here, and he teaches well. See in that sentence there is no helping verb. So teaches is the main verb, and it is carrying the main meaning of the sentence within itself without any helping verb. But let us see the second example where teaching itself is the main verb, but it is not expressing the action of the subject by itself. As it is present continuous, so it needs to have with it one helping verb to express the action, that is here. So is helping verb here and teaching is main verb. So here in the second sentence जो teaching verb है इसने एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब की मदद ली है वो है इज। तो समझ लीजिए मेन वर्ब मतलब वो वर्ब होता है जो सेंटेंस में जो कोर मीनिंग होती है वो खुद ही विद इन इटसेल्फ कैरी करता है, या फिर उसको एक्शंस एक्सप्रेस करने के लिए या फिर स्टेट ऑफ बीइंग एक्सप्रेस करने के लिए कभी कभार एक और हेल्पिंग वर्ब की भी जरूरत पड़ती है। तो ऐसे अगर वर्ब होते हैं तो उनको हम बोलते हैं मेन वर्ब। Okay, so now we will see that subtypes of verb. Subtypes of verb. So now what are the subtypes of main verb? So there are different subtypes of main verb. See, almost 15 subtypes of main verb I have written there on the screen. You can see it clearly. सो इसका मतलब ये है कि ये सभी के सभी जो 15 वर्ब है वो सेंटेंस में एक मेन वर्ब का फंक्शन करेंगे, राइट? वो डेफिनेटली दे विल बी फंक्शनिंग इन अ सेंटेंस एज अ मेन वर्ब। मतलब वो सेंटेंस में एक जो मेन मीनिंग होता है सेंटेंस का वो खुद में ही कैरी करेंगे। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि अगर उनको सब्जेक्ट में सब्जेक्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट की एक्शन एक्सप्रेस करनी है या फिर स्टेट ऑफ बीइंग एक्सप्रेस करनी है तो कुछ टेंसेस में उनको हेल्पिंग वर्ब की सहायता भी लेनी पड़ेगी। तो ऐसे अगर वर्ब है तो हम उनको मेन वर्ब बोलते हैं। तो लेट अस सी द फॉलोइंग 15 वर्ब्स आर सब टाइप्स ऑफ मेन वर्ब। सो एक्शन वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, नॉन फाइनाइट, रेगुलर, इरेगुलर, देन ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है, detransitive verb is also there, ambitransitive verb is also there, then
irrogative verb is also there, reflexive verb is also there, causative verb, and finally there is phrasal verb. So overall there are 15 subtypes of main verb. Now definitely they will be functioning as main verb in a sentence, and they will carry the main meaning, core meaning of the sentence, and they will express the state of being or action of the subject, sometime by themselves, and sometime they will need the help of helping verb. So let us see now each type in detail. Okay. So now this is the first subtypes of main verb, that is action verb. It is also called as dynamic verb. So let us see now the definition of the action verb. It is a word that expresses a physical or mental action. So being action, it shows action of the subject. तो अगर ये एक्शन दिखाता है तो डेफिनेटली इट विल शो आइदर फिजिकल एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट और mental action of the subject. So these two things are very important in concern to that action means not only the physical action, it is also mental action. So this is very important. Either it shows being an action verb, it will show a physical action of the subject or mental action of the subject. Let's see the example. He runs daily. Now he is here subject and the verb is runs. So runs is here physical action. So here runs is that action verb. In the second example, she dances well. Now she is subject here and dances well is the action verb. Physical action is that one, dances. Then next, in the third sentence, they build houses. Now they build houses here also. This one is an action verb, right? They build houses. So this build is action verb, and that's also physical action. But I think about it. I think about it means the subject here, that's it, that is I, and he is mentally, that's the mental process of the subject to think about something, so about it. So here think is mental process of the subject I. So in this way, here think in the fourth sentence, it is action verb, but it is not physical action. Thinking is mental process of brain, that's mental action is that one. So here this in the fourth sentence, think is mental, whereas in the previous three examples there are action verbs. Let us see the next subtypes of the main verb. Hmm. So the second subtypes of the main verb is stative verb. Let us see the definition of a stative verb. A verb that expresses a state or condition, possession, feeling, opinion, perception, and existence rather than an action of the subject. So this is the definition of the stative verb, student. Now see, I said you in the earlier slide also that so what are the main verbs are there. So see here, stative verb being what the verb shows, it can be either a stative verb or action verb. I have already we have already discussed about it. So this is the second type of the main verb, that is stative verb. Now let us see what does the stative verb expresses. Stative verb shows the condition or state of a subject. So here
condition or the state of a subject. It means that in what condition or in what state the subject is. So either it can possess something, the subject can possess something, a subject can feel something, it can express its opinion, or it can perceive something. Percept means understanding something with our senses, that is perception. Then it can show existence of the subject rather than showing an action. So state of being or the stative verb is that verb that shows condition or state of a subject, such as what does the subject possess, what is the feeling of the subject, what is the opinion of it, expresses the opinion of the subject, it expresses the perception of the subject, it shows the existence of the subject. So these are the things that are shown by a stative verb. Now let us see the example of the stative verb. Now I know the answer, this is the first example. Now there in the first sentence, I is subject and no is verb there, but is it showing any action there? No, it is, no is the verb and it is not showing any physical action, it is not showing uh, any physical action there. So I know the answer. So it means that the subject is in the state or in the condition of knowing something. He knows something, so he is in the state of knowing something. So that is why know there is stative verb. Then in the second example, she has a car. Now see here, she is a subject and in this sentence has is a verb. Now has is a verb, it is showing possession of the subject she. Means she is having two cars. Sorry, she is having a car. Then in the third sentence, they love music. Now it is about the feeling of the subject toward music. So feeling of love toward the music. So they, their subject, and love is that's feeling related to music. Now we believe you. We believe you. Here also that's mental process. We believe you. Listen, student, these are the verb that we can't generally use in ing form. Why? Because they show a state of the subject, that for the particular time the subject is in a particular state. So that is the state of uh, as the verb indicates or shows the state of a subject, so we can't use them in ing form. Now this is about stative verb, we can't say that. See, I am knowing the answer. Now I know the answer is the sentence there, and if we say that I am knowing the answer, so showing this, I am knowing the answer, I am knowing the answer, saying so will be wrong, right? Yes, that is wrong sentence. So we can't say that I am knowing the answer. The action is not going there. It is not going on. It is not continuous. It is just a state of the subject to have the knowledge of something. So it is the state. It is not action that is going on or continuous. Now she has a car. So we can't say that the action is going on of having a car. It's not so. It is only a state that the position of a position or state or condition of the subject, that she has a car. Okay. Then in the third sentence, they love music. We can't say that they are loving music. Means the action is not ongoing there. That is general scenario. That is the general state of they, that they love music. So here the action is not going on. It is state of the subject, that is love. Believe you, we believe you, that is the state of we, that they are in the condition, they are in the state to believe you. So here also we can't say that the action of believing is going on. No, it is just a state. So that is stative verb. Now let us see the next subtype of the main verb.
Okay. Now the third subtypes of the main third subtype of the main verb is linking verb, that is also called as copular verb. Now let us see the definition of the linking verb. Now it is the verb that links the subject to its complement. Means he subject complement is also there in the sentence, and there is copular verb or linking verb that joins the subject with its complement. Now before that, student, we must know that what does it mean by subject complement. तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं, ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सब्जेक्ट को रीनेम करते हैं या फिर डिस्क्राइब करते हैं, यानी कि सब्जेक्ट का वर्णन करते हैं या फिर सब्जेक्ट को एक नया नाम देते हैं। तो ऐसे अगर वर्ड्स है दैट comes after the linking verb and they rename or describe the subject, then they are called as either a word, single word, or group of word. They are called as subject complement because they join the subject, the verb the verb which join the subject with its complement are known as linking or copular verb. Let us see the example. She is happy. Now in this sentence, is the verb and she is subject. Now see what I told you, the linking verb joins the subject with its complement, and what I said you, what does it mean by subject complement? Subject complement ऐसे words होते हैं जो verb को डिस्क्राइब करते हैं या फिर रीनेम करते हैं। तो डिस्क्राइब करते हैं मतलब डिस्क्राइब करने वाले कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, हमने पार्ट ऑफ स्पीच पे पढ़ा है कि ऐसे वर्ड्स होते हैं डिस्क्राइब करने वाले, नाउन या प्रोनाउन को जो डिस्क्राइब करते हैं, ऐसे वर्ड्स को हम एडजेक्टिव बोलते हैं। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है हमारा सी, उसको हैप्पी ये एडजेक्टिव है, और ये जो वर्ब है इज, उसके बाद आया है एडजेक्टिव। तो इसका मतलब हमारा जो एडजेक्टिव है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। क्यों सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है? क्योंकि वो सी के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन उसको डिस्क्राइब कर रहा है। यस, उसको डिस्क्राइब कर रहा है, उसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है। and in between the subject and the adjective, that is happy, there is one verb, that is linking verb, जो सब्जेक्ट को उसकी एडजेक्टिव के साथ, उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ ज्वाइन करने का फंक्शन कर रहा है। तो बिकॉज ऑफ दैट इट इज कॉल्ड एज कॉपुलर और लिंकिंग वर्ब। ही बिकेम अ डॉक्टर। अब यहाँ पे जो है सेकेंड सेंटेंस में ही जो है एक सब्जेक्ट है, और जो बिकेम है ये एक लिंकिंग वर्ब है। अब देखो जरा ये लिंकिंग क्यों है, और लिंकिंग वर्ब के बाद ये एक अ डॉक्टर आ गया है जो कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अब ये किस तरीके से सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, जरा देखो। ही बिकेम, अगर हम बस इतना ही बोलते हैं ही बिकेम, अब वो क्या बना है वी डोंट अंडरस्टैंड दैट। पर जबकि ये वर्ड अ डॉक्टर हम यहाँ पे यूज करते हैं, देन आवर सब्जेक्ट्स मीनिंग बिकम्स कंप्लीट, एंड दैट इज व्हाई अ डॉक्टर इज अ कॉम्प्लीमेंट दैट इज कंप्लीटिंग द मीनिंग ऑफ द सब्जेक्ट ही। और सब्जेक्ट को उसके वर्ब उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ जोड़ने वाला जो वर्ब है वो है बिकेम। तो एज दिस बिकेम वर्ब is uh, it is completing, it has been used there, the verb became has been used there to join the subject he with its complement, that is a doctor। तो यहाँ पे became एक linking verb है। The soup tastes delicious। Now here the soup tastes delicious। अब ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये है द सूप, और यहाँ पे जो वर्ब है वो टेस्ट है, और टेस्ट के बाद जो वर्ब के बाद जो एडजेक्टिव आया है वहां पे है डिलीशियस। तो इसका मतलब वो फूड कैसे लगता है, तो वो फूड डिलीशियस लगता है। तो यहाँ पे डिलीशियस जो है, तो सूप जो है, सूप कैसे लगता है, डिलीशियस। तो यहाँ पे जो डिलीशियस है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का फंक्शन कर रहा है। देन द स्काई लुक्स ब्लू। अब लुक्स जो है यहाँ पे वर्ब है, ये एक लिंकिंग वर्ब है। क्यों? क्योंकि ये जो स्काई है उसको डिस्क्राइब कर रहा है। तो डिस्क्राइब कर रहा है, ये वर्ब जो है लुक वो स्काई को डिस्क्राइब कर रहा है, दैट इज व्हाई इट इज लिंकिंग वर्ब। और उसके बाद जो एडजेक्टिव आया है जो स्काई को डिस्क्राइब कर रहा है वो है
काय की कॉम्प्लीमेंट। नंबर थर्ड में द सूप टेस्ट डिलीशियस, यहाँ पर भी एडजेक्टिव है, तो ये डिलीशियस इज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट देयर। एंड ही बिकेम अ डॉक्टर, तो यहाँ पे डॉक्टर जो है, अ डॉक्टर जो है ये एक नाउन है, तो ये एक सब्जेक्ट को रीनेम कर रहा है, ही को रीनेम कर रहा है। तो इस तरीके से इन सभी सेंटेंसेस में एक लिंकिंग वर्ब है, जो वर्ब जो सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ लिंक कर रहा है, दैट इज व्हाई दे आर लिंकिंग वर्ब। एक चीज और बताऊंगा यहाँ पे डियर लर्नर्स, कि जो लिंकिंग वर्ब होते हैं वो मोस्टली या तो बी के फॉर्म होते हैं, राइट। क्या, एक तो बी के फॉर्म होते हैं, तो बी के फॉर्म कौन से बी के फॉर्म होते हैं वो, तो बी के फॉर्म कौन से है सभी को मालूम होना चाहिए। तो बी के फॉर्म होते हैं एम, इज, आर, वाज, वर, शॉल बी, विल बी। तो ये है बी के फॉर्म दैट वी यूज टू फ्रेम सेंटेंसेस। तो ये हो गए। और कुछ और भी वर्ड्स वर्ड्स होते हैं, या फिर वर्ब बोलो, वर्ब होते हैं जो कि लिंकिंग के कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि गेट है, राइट, गेट हुआ। उसके बाद फील हुआ, फील हुआ। उसके बाद साउंड हुआ, राइट, साउंड हुआ। उसके बाद फील, साउंड। उसके बाद ग्रो हुआ, देन फील, साउंड, गेट, ग्रो। इस तरीके के कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनको हम लिंकिंग वर्ब बोल देते हैं, क्योंकि वो क्या कहते हैं, वो सब्जेक्ट को उन उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ ज्वाइन करते हैं। और यू पीपल नो दैट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट करके हम यूज करते हैं आइदर नाउन और एडजेक्टिव। तो in this video it is up to this now. I'm at the end of the video. In this video we have learned about the three subtypes of main verb, that is linking verb, उसके पहले हमने देखा stative verb and action verb। तो सभी I hope you have understood all the three subtypes of main verb in detail without any doubt in your mind. So keep watching my videos continuously. Next, in the next video the i will I'll be teaching you about the remaining subtypes of the main verb. So keep watching and increasing your knowledge. Be with me. Thank you for watching my videos. See you in the next video.